Let's go on. Now we are going to do another interesting question type. इसको कहते हैं yes, no, not given. Yes का मतलब है आहो, no का मतलब है नहीं, not given सानू की पता. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, ये भी वही है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह, लेकिन यहां पे आपने देखे क्वेश्चंस, देखें जरा टॉप पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है. डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अग्री विद द क्लेम्स ऑफ द राइटर. तो यस नो नॉट गिवन में राइटर के क्लेम्स आते हैं और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है जो आपने देखनी होती है. ठीक है, अब राइटर के क्लेम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 32. Acknowledging people such as Plato or Da Vinci as geniuses. अब आपने देखना है प्लेटो डा विंची कहां पे दिया हुआ है, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से. Acknowledging people such as Plato or Da Vinci as geniuses will help us understand the process. Process किस चीज का? जीनियस बनने का. Will help us understand the process by which great minds create new ideas. कि अगर हम एक्नॉलेज करते हैं प्लेटो और डाविंची की जीनियसेस को, तो इससे हमें मदद मिलेगी कि हमें पता चले कि ग्रेट माइंड्स किस तरह नए आइडियाज को क्रिएट करते हैं. वापस आइएगा पैसेज पे, सेकंड पेज, फोर्थ लास्ट पैराग्राफ. अब मजे की चीज पता है क्या है? सारे के सारे आंसर यहीं पे मिलने हैं. अब आपने बाकी का पैसेज नहीं पढ़ना, सारे के सारे आंसर्स इन 4 पैराग्राफ्स में मिलेंगे. अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूं शुरू से. Fourth last paragraph, second page, first line. The notions of insights, creativity, and genius are often invoked, but they remain vague and of doubtful scientific utility, especially when one considers the diverse and enduring contributions of individuals such as Plato, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Beethoven, Galileo, Newton, Kepler, Curie, and Edison. These notions merely label rather than explain. अब ये notions जो हैं explain नहीं करते, सिर्फ उनको label करते हैं. The evolution of human innovation. We need another approach and there is a promising candidate. Now let's go back. Acknowledging people such as Plato, Da Vinci as geniuses will help us understand the process by which great minds create new ideas. Answer is no. Well done. वापिस आए, दोबारा पढ़ें. These notions merely label rather than explain. अब जब कोई चीज explain नहीं होगी तो हम उसको understand नहीं करेंगे. Will help us understand. Understand कैसे होगा? जब उसको आप explain करेंगे. ठीक है, help us understand the process by which great minds create new ideas. So these things will not help us understand because these are only labels. There is no explanation. I mean, no one can define the what do you say intelligence of Plato or Newton. और अगर न्यूटन ने जिन चीजों को फॉलो किया, अगर कोई और फॉलो करे, हमारे पास और न्यूटन्स क्यों नहीं आए? Things like that. Question number 33. Law of effect was discovered at a time को अंडरलाइन करें कि लॉ ऑफ इफेक्ट एक ऐसे वक्त पे डिस्कवर हुआ व्हेन साइकोलॉजिस्ट्स वर सीकिंग का मतलब है तलाश करना, अ साइंटिफिक रीजन व्हाई क्रिएटिविटी अकर्स. कि वो रिसर्चर्स ढूंढ रहे थे साइकोलॉजिस्ट कि क्रिएटिविटी होती क्यों है. तो उस वक्त लॉ ऑफ इफेक्ट जो है डिस्कवर हुआ. वापिस आए, लॉ ऑफ इफेक्ट मिल गया. थर्ड लास्ट पैराग्राफ. Law of effect was advanced by psychologist Edward Thorndike in 1898, some 40 years after Charles Darwin published his groundbreaking work on biological evolution, on the origin of species. This simple law holds that organisms tend to repeat successful behavior and refrain from performing unsuccessful ones. Let's go back. Law of effect was discovered at a time when psychologists were seeking a scientific reason why creativity occur. It is not given at a time. बिल्कुल भी नहीं बताया, दोनों को अलग अलग मेंशन किया है, लेकिन किस वक्त हुआ, एक ही टाइम पे हुआ, आगे पीछे हुआ, but there is no mention of that. So answer is not given. Question number 34. Law of effect states that
नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व, अंडरलाइन करें, नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब इसको ढूंढना है. नो प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेव पैराग्राफ. लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन. जस्ट लाइक डार्विन्स लॉ. मिल गया सबको? थर्ड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट लाइन. जस्ट लाइक डार्विन्स लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, the law of effect involves an entirely mechanical process of variation and selection without any end objective in sight. वापिस आए. Law of effect states that no planning is involved. अब सोचें जरा, no planning is involved without any end objective in sight. इसका क्या मतलब है? No planning is involved. Answer is yes. Question number 35. Law of effect sets out clear explanations. Underline करें, sets out clear explanations को. About the sources of new ideas and behavior. Underline करें, sources of new ideas and behavior. So law of effect sets out clear explanation. If explanation is clear, answer is yes. If unclear, no. And if they don't mention, then not given. So please come back. Second last paragraph. Yes, second last paragraph, first line. Of course, the origin of human innovation demands much further study. In particular, the provenance of the raw material on which the law of effect operates is not as clearly known as that of the genetic mutations. Not clearly known का क्या मतलब है? Yes, sets out clear explanations. वहां पे क्या बोल रहे हैं? Not clearly known. आंसर क्या होगा? No. False नहीं होगा. No. और क्यों नो हो रहा है ये भी सोचिए ना. यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन 35 में sets out clear explanation और वहां पे क्या बोला है? Exactly. Yeah, that's right. Question number 36. Many scientists are now turning away. Many scientists को underline करें, turning away को underline करें from the notion of intelligent design and genius. कि जो intelligent design और genius का जो notion है किस तरह से हुआ? Many scientists now are turning away. Okay, it's the second last paragraph. We've got some ideas there. Last paragraph, yeah. Let's read the last paragraph. The time seems right for abandoning the naive notions of intelligent design and genius and for scientifically exploring the true origins of creative behavior. अब देखें, देखने में लग रहा है बात वही हो रही है, लेकिन इसका आंसर जो है वो डिसाइड करेगा. Many scientists are now turning away. अब क्या उन्होंने साइंटिस्ट का कोई रेफरेंस दिया? नहीं. So answer is not given. Well done. बाकी जो है ना नोशन ऑफ इंटेलिजेंट डिजाइन एंड जीनियस वो तो बताया है, लेकिन मैनी साइंटिस्ट आर टर्निंग अवे जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में नहीं बताया. हेंस द आंसर इज नॉट गिवन.